In another major development to tourism industry in the tiny state of Sikkim, about 80% of construction work of the Ropeway and Support facilities for mega tourist project of the state Skywalk Project at Bhaley Dhunga Yangang in South Sikkim has been completed. The total cost of the Ropeway and Support facilities is Rs 173 crore, which was already sanctioned from the Ministry of Tourism. Project site in charge engineer Rajiv Kumar said the Ropeway and Support facilities for mega tourist project of the state Skywalk Project will be completed by August this year. It is nearly 80% complete. The final 20% it takes a lot of time because the rope pulling work or the multi-pair cables laying, this takes 1 month time individually for each activity. And we are facing a lot of challenges like the weather also. As you know, it is pre-monsoon now, it's already raining, so we have to consider many factors. Upper station we are working, we have 2 towers. After that we are hopeful to complete it by August. We are only dealing with the ropeway parameters and not for the skywalk right now. Meanwhile, Sharid Khan, Service Sales Manager, POMA India said, "We have faced difficulties to erect the pillars, but we have done similar projects in other countries, so we have able to do it here also. We have not compromised anywhere, but have focused on quality work. This project is very rare in India, and this will be very unique project once complete," he added. 3.5 किलोमीटर का ये रोपवे है जिसकी स्पीड 6 मीटर्स पर सेकेंड है। 18 केबिन्स हैं इसमें। 18 केबिन्स में इसका ये बहुत स्पेशल डिज़ाइन केबिन है, डायमंड शेप में, ग्रीन कलर के, जिसमें 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं। हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, एस्पोमा, फ्रांस की यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की टेक्नोलॉजी। हमें स्नो से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें सेफ्टी पैरामीटर्स इतने हैं कि स्नो सीज़न में भी रोपवे आराम से काम करता है। अभी तक इस तरीके के रोपवे जो सिक्किम बालाडूंगा में है, ऐसे 5 रोपवे हैं। 2 इंडोनेशिया में है, जिसमें तीसरा मैं कहूँगा यहाँ पर बालाडूंगा में है। सेम एल्टीट्यूड नहीं है, हायर एल्टीट्यूड बट डिफिकल्ट टेरेन, जिसमें चैलेंजेस हमें जो फेस करने पड़ते हैं टावर इरेक्शन के, कैसे हमें मटेरियल ऊपर लेकर जाना है, कैसे इरेक्शन करना है, प्लस रोप पुलिंग में भी जो चैलेंजेस आएंगे वो लोग हम फेस करेंगे। बट यस, हमने पहले ये काम किया हुआ है, वेल एक्सपीरियंस टीम है हमारी, तो हम लोग यहाँ पर भी अच्छी तरीके से काम करेंगे। The project is India's first and Asia's second after China, situated at 10,300 feet above sea level. The ambitious Skywalk project has been planned to be built in the state at Yangang in South Sikkim by former Chief Minister Pawan Chamblin, and it was his dream project. The project is expected to attract huge number of tourists in the state. The support facility will have 18 large pillars and 18 cabins. With Dipal Gurun, Gangtok.